Hi friends, welcome to DM classes. Now we will start with our second chapter of Maths Part 2 Geometry, that is parallel line. Now definition of parallel line is the lines which are coplanar and do not intersect each other are called parallel lines. In the given figure, line L is parallel to line M. Second, transversal. If a line intersects two lines in two distinct points, then the line is called the transversal of those two lines. In the given figure, line N intersects line L and M at point A and E respectively. Hence, line N is a transversal of line L and line M. Now, angle formed by two lines and their transversal. First, corresponding angles. If the arms on the transversal of a pair of angles are in the same direction and the other arms are on the same side of the transversal, then it is called a pair of corresponding angles. मतलब जो एंगल पैरेलल लाइन के ऊपर और ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही साइड पर होते हैं उसे हम corresponding एंगल कहते हैं. In the adjoining figure, angle A and angle B is a pair of corresponding angles. Second, alternate angles. A pair of angles which are on the opposite sides of the transversal such that their arms on the transversal are in opposite direction is called pair of alternate angles. मतलब यहाँ डायग्राम में एक जेट फॉर्म बन रहा है और जो भी एंगल इस जेट फॉर्म में बने होते हैं उसे हम कहते हैं अल्टरनेट एंगल, और जो एंगल जेट फॉर्म में अंदर की तरफ बने होते हैं उसे हम कहते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और जो एंगल जेट फॉर्म में बाहर की तरफ बने होते हैं उसे हम कहते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल. इन द एडजेसेंट फिगर, एंगल ए एंड एंगल बी इज अ पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एंड एंगल डी एंड एंगल ई is a pair of alternate exterior angles. Third, interior angles. A pair of angles which are on the same side of the transversal and lie between the two given lines is called a pair of interior angles. Means जो एंगल पैरेलल लाइन के अंदर और ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही साइड बने होते हैं उसे हम कहते हैं इंटीरियर एंगल. In the adjoining figure, angle A and angle B is a pair of interior angles on the same side of the transversal. Angles formed by two lines and their transversal. When a transversal line N intersect two lines, line L and line M, in two distinct points, eight angles are formed as shown in figure. Pair of angles formed out of these angles are as follows. According to the figure, pair of corresponding angles are: first, angle D, angle H. Second, angle A, angle E. Third, angle C, angle G. Fourth, angle B and angle F. Pair of alternate interior angles. First, angle C and angle E. Second, angle B and angle H. Pair of alternate exterior angles are: first, angle D and angle F. Second, angle A and angle G. Pair of interior angles on the same side of the transversal. First, angle C and angle H. Second, angle B and angle E. Some important properties. First, when two lines intersect, the pair of opposite angles formed are congruent. In the given diagram, line L and line M intersect at point P. The pair of vertically opposite angles that are congruent are: first, angle A is congruent to angle B. Second, angle C is congruent to angle D. Second, the angles in a linear pair are supplementary. For the given diagram, angle A and angle C are in linear pair. Therefore, angle A plus angle C equal to 180 degree. Also, angle D and angle B are in linear pair. Therefore, angle D plus angle B equal to 180 degree. मीन्स जब हम दो एंगल्स को ऐड करते हैं और हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है तो वो एंगल्स लीनियर पेयर कहलाते हैं. थर्ड प्रॉपर्टी, व्हेन वन पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स इज कॉन्ग्रुएंट देन ऑल द रिमेनिंग पार्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. फॉर एग्जाम्पल, इन द गिवन डायग्राम, इफ एंगल डी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एच, देन एंगल सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल जी, एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ई एंड एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एफ. Fourth property, when one pair of alternate angles is congruent then all the remaining parts of alternate angles are congruent. Example, for the given diagram, if angle C is congruent to angle E, then angle B is congruent to angle H.
Also, angle D is congruent to angle F and angle A is congruent to angle G. Fifth property, when one pair of interior angle on one side of the transversal is supplementary, then the other pair of interior angles is also supplementary. Example, for the given diagram, if angle C plus angle H equal to 180 degree, then angle B plus angle E equal to 180 degree. Thank you. If you like the video, please press the bell icon